कैसे हैं आप सब? नमस्ते एवरीवन, बिन अ व्हाइल। और चैट में जरा मुझे बताइए किस किस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग, वी आर गुड, हाउ आर यू? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हाय शशांक, हाय मिहिर, हाय आराधना, उमयल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। नेहा, यूट्यूब पे लाइव हो गया है क्या? एक बार कैन समवन प्लीज प्लीज कंफर्म मी। मैं भी चेक कर रही हूँ अपने एंड पे। ओह, आराधना, राइट, चलिए वी आर लाइव and let's check for LinkedIn as well. I guess we're live on LinkedIn as well. चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एक बार ये जो है जूम सेशन सबके साथ शेयर करवा देते हैं। Yes, finally. So, hi Kushagra. Yes, live on YouTube. Thank you so much for confirming. सो आई होप आप सबका जो वीकेंड है अभी तक, जिस जिस वीकेंड वाइब को मैं ऑलमोस्ट रूइन कर चुकी हूँ ठीक है, संडे की नाइट को जो है बुलाकर इंटरव्यू, मैम हम आराम से आज सोच रहे थे कि चिल करेंगे, इंटरव्यू जॉब आर्टिकल सबका टेंशन नहीं लेंगे, और आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा कि भाई लाइव इंटरव्यू शुरू होने वाला है 3 बजे 11 बजे, फिर 8:45 पे। मैंने कहा चलो अब इतना बोल रहे हैं तो चल ही लेते हैं, अदरवाइज वी वर लाइक फुल्ली इन अ चिल मोड. Nevertheless, I am really sure that you guys going to have a good time here. Reason is क्या कि यहाँ पर जब हम सबके साथ एक कोलैबोरेटिव मैनर में सीखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, राइट? एंड हो सकता है कुछ ऐसे इंटरव्यू, जैसे अभी आप काफी लोग आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे इंटरव्यू में, राइट? तो हो सकता है कि कुछ उनकी मिस्टेक से आपको पता चल जाए, राइट? तो वो मिस्टेक्स आप डेफिनेटली खुद की तो आपको इम्प्रूव करनी ही है, बट दूसरों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस से भी आपको सीखना चाहिए, और अपनी जो करेक्शंस है जहां पर उनको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सो जरा मुझे चैट में फटाफट से बता दीजिए हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर अ लाइव मॉक इंटरव्यू राइट नाउ. जिसका भी इंटरव्यू इस वीक में अलाइंड है, जो अभी कमिंग वीक है उसमें अलाइंड है, whosoever is going to appear for an interview, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, प्रेमिसेस पे है, ग्रुप इंटरव्यू है, एंड नाउ दैट कैंपस प्लेसमेंट्स हैज द registration has begun. I believe 19 तक है registration, so all the chartered accountants in the house, it becomes really important for you guys to appear as many mock interview as possible. जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना कम आप इंटरव्यूअर के सामने नर्वस होंगे, राइट? और नर्वस कम होंगे, यू विल कम आउट एज अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी. एंड बिकॉज सीए बनने के बाद यू हैव टू हैंडल लॉट ऑफ क्लाइंट्स, टफ क्लाइंट्स, and we need tough people for that, tough CAs for that. So if you can really showcase that in your interview, I mean, obviously there is no compensation for टेक्निकल नॉलेज, वो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए. आई मीन VCAs आर नोन फॉर दैट, राइट? सो उसमें तो हम कमी छोड़ेंगे ही नहीं, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस एंड शोकेसिंग योरसेल्फ एज दिस रियली पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, दैट इज रियली गोइंग टू चेंज द गेम. बिकॉज एक बार को क्या है कि शायद टेक्निकल ऐसा लगता है कि बंदा सीख लेगा धीरे धीरे, राइट? बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन योर ओन केपेबिलिटीज as well as you're able to handle other people, you surely stand a chance. And this is not just for CAs, any मेरे को इतने दिन से मतलब डेली बेसिस पे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम मेरा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो गया है, 4 अटेम्प्ट हो गया है इंटरमीडिएट लेवल पे, CA क्वालिफाई करने में 4 अटेम्प्ट हो गया है. सो डू वी स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल हु आर आउट देयर, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है, रैंक है? where do we stand in front of them? हमारे तो अटेम्प्ट्स हैं, कोई खास करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं है. so how are we going to really showcase ourselves as this really
talented person, and do we even stand a chance to get selected? And I always say this thing, देखो, a lot of factors come into play when you're applying for jobs. अभी क्या है, this is the peak hiring season, ठीक है? तो अभी जितनी जगह पर पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, उतनी जगह पर आप अप्लाई करिए. हमारा कॉन्फिडेंस कब डाउन आने लग जाता है? जब हमें लगता है कि अच्छा जी, मतलब 5 जगह अप्लाई कर दिया है यार, मुझे तो 5 जगह से रिप्लाई ही नहीं आ रहा है. क्या मेरे रिज्यूमे में कुछ कमी है? क्या मैंने सही तरीके से मैसेज नहीं भेजा एचआर को, या फिर उस जगह पर बहुत सारी वेकेंसीज हैं क्या? एंड काइंड ऑफ स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. प्लीज अंडरस्टैंड द जॉब, like the placement mechanism. पहली बात तो this entire exercise is going to take 1.5 months. So all the CAs, all the articles in the house, पहली बात तो वो निराश तो होना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है definitely there are friends of yours and peers of yours who have already gotten job opportunities, उनको offer letter मिल चुका है, but आप अपनी जर्नी उनकी जर्नी के साथ मत कंपेयर करो. One thing is this, right? So have faith that the entire cycle of getting the offer letter, getting placed is going to take 1 to 1.5 months, right? And in that process, you have to just keep applying until you're satisfied with the opportunity that you land. Okay? So start with like all the firms. Don't have any criteria, I would say. कि सबको लगता है नहीं मुझे जो बिग 4 में ही जाना है तो मैं बिग 4 में ही जाता हूँ ना, मेरे को बाकी जगह इवन रेज्यूमे फॉरवर्ड करने की भी क्या जरूरत है, मेरे को तो बिग 4 से आ ही जाएगा रिप्लाई. इवन आप उस मिसकंसेप्शन में भी मत रहो, उस मिथ को भी अपने साथ मत रखो. आई वुड से टॉप 10, टॉप 20 बिग 4, अगर आप क्वालिफाइड है इंडस्ट्री, कीप ऑल दी ऑप्शंस ओपन फॉर यू. ठीक है? क्योंकि कब कहाँ पे मूड चेंज हो जाए, कब आपको लगता है कि कोई ऐसी वेकेंसी टकरा जाए जो आपके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की हो, वो आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है? सो 1, डू नॉट कंपेयर. 2, हैव फेथ दैट इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड ऐसा मत सोचना कि 5 जगह अप्लाई करा है तो भाई 2-3 से तो रिप्लाई आ जाएगा. नो, आपको डेली बेसिस पे 10 to 15 एप्लीकेशंस रोल आउट करनी पड़ेंगी इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स. अगर आप टोटली कैंपस प्लेसमेंट्स पे रिलाई करना चाहते हो, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, whoever is applying for campus placements, that you get placed and you get placed in your dream company. But others who are also trying कि ऑफ कैंपस भी हो जाए, you have to make connections on LinkedIn. You have to be very very active on LinkedIn. Keep scouting for opportunities. कुछ लोग डालते रहते हैं LinkedIn पर that vacancy in this firm. Reach out to those people. Don't shy away. और सिर्फ ऐसे मत करना कि उन्होंने बोला है कि अपना comment जो है interested छोड़ दो. You have to stand out, right? Everybody is leaving comments interested in this vacancy, interested in this vacancy. How do you stand out? You have to draft a proper message for that person who has put out that vacancy, right? LinkedIn पर इतनी opportunities देखी है ना आप सबने, देखी होंगी. I'm pretty sure. कैंपस रजिस्ट्रेशन सम, ठीक है? तो आपने देखा होगा सारे लोग उसमें कमेंट करके चले जाते हैं इंटरेस्टेड. अरे भाई, इंटरेस्टेड हो तो अपना पूरा कैंडिडेट प्रिपेयर करके उनको मैसेज डालिए ना. आप प्रिपेयर अ प्रॉपर मैसेज फॉर दैट पर्सन, राइट? दैट व्हाई यू आर इंटरेस्टेड. अटैच योर रेज्यूमे विद योर कवर लेटर. जो ईमेल की कॉपी में आप लिखते हो वही आप कवर लेटर का कंटेंट बनाकर उसको जो है कवर लेटर और अपना रेज्यूमे दोनों अटैच करके भेजो. एक पर्सनलाइज्ड मैसेज दैट आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल. उनकी प्रोफाइल को रीड थ्रू करो, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, किस पोजीशन पे है, डायरेक्टर है क्या. कई बार डायरेक्टर लेवल पे जो लोग हैं अपना खुद ही वैकेंसी डाल रहे होते हैं कि मुझे अपनी टीम में मेंबर चाहिए, तो वो अपने आप ही वैकेंसी डाल के एंड देन दे फॉरवर्ड ऑल दोस रेज्यूमेस दैट दे हैव रिसीव्ड टू द एचआर सो दैट दे कैन स्टार्ट द इंटरव्यूइंग प्रोसेस. So in that case, if you personalize the message, that person is going to remember your name. And whenever your chance for interview comes up, that person is definitely going to remember कि हाँ इसने मुझे personalized message डाला था. LinkedIn Premium किस किस के पास है यहाँ पे? Please tell me. LinkedIn Premium नहीं है? अंजलि के पास नहीं है, वैभव है, ठीक है. Everybody else? नहीं है. No, 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 no. So this is not done, guys. You guys are in the active placement season, active hiring season चल रहा है, and you don't have LinkedIn. Like you cannot do this mistake. First month free मिलता है LinkedIn. अभी जाकर after this session ends, please buy LinkedIn Premium. अपनी LinkedIn प्रोफाइल को अपडेट करना, LinkedIn प्रीमियम परचेज करना, और LinkedIn जॉब्स वाला जो सेक्शन है ना, लेट मी शो यू, वहां पर ना आपको अपने हिसाब की वैकेंसीज LinkedIn खुद जो है वो रेकमेंड करने लग जाता है, राइट? लेट मी शो यू.
जैसे ये मेरा लिंक्डइन है, आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो है अपना रिज्यूमे भी मतलब लिंक्डइन पर ऐसे पोस्ट कर देते हैं. That's also good. Like you may have a chance to land good opportunities. But if you go to this section, it is going to read your profile, right? It is going to read your profile, and then it's going to recommend you jobs according to your profile. अगर आपकी profile में right keywords होंगे, financial statements, substantive procedures, right? Test of controls, or auditing process, audit planning, concurrent audit, whatever keywords you have related to auditing, if you have those in your profile, आपको LinkedIn का जो UI है, जो एल्गोरिदम है, वो उस हिसाब से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रेकमेंड करेगा. ठीक है. तो मैम वुड बी नीड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है, सी फर्स्ट मंथ इट्स एनीवे फ्री. तो आप एक जो है अपने फोन में रिमाइंडर लगा के रख लेना. आई मीन ठीक है, दैट्स व्हाट आई रेकमेंड पीपल की फॉर एग्जांपल एक ही महीने बस ट्राई करके देखना. बट आई एम प्रीटी श्योर एक और प्लान है उसमें 6 मंथ्स के लिए आपको फ्री मिल जाता है इफ यू हैव द स्टूडेंट आईडी. आई विल रिसर्च अबाउट इट कि एग्जैक्टली वो कैसे मिलता है, एंड देन आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल. ठीक है. सो यू कैन गेट इट फॉर 6 मंथ्स. तो एटलीस्ट 2 महीने के लिए तो आपको करना चाहिए, क्योंकि एनीवे अभी हायरिंग सीजन चल रहा है. इतना लाइक 1500 रुपए तो आप खर्च कर ही सकते हो यार अपने लिंक्डइन उसके लिए. अच्छा, दे हैव स्टॉप दैट, कुशाग्र इज सेइंग. ठीक है, बट स्टिल आई मीन अगर 2 मंथ्स का पूरा साइकिल होने वाला है तो आई थिंक फर्स्ट मंथ फ्री हो जाएगा, 1 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ेगा. एवरीबडी शुड टेक लिंक्डइन प्रीमियम, एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट गेटिंग एनी कमीशन फ्रॉम लिंक्डइन फॉर सेइंग दिस, ट्रस्ट मी. सो नो अमन, इट्स नॉट फॉर 3500. आपको बिल्कुल जो बेसिक वाला प्लान है ना, आप उसमें ज्यादा फीचर सेलेक्ट करोगे तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्लान अमाउंट. तो आप बेसिक फीचर एकदम बेसिक वाला सेलेक्ट करना, एंड यू विल स्टिल हैव द ऑप्शंस टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स, राइट? तो या इट्स 1500 पर मंथ प्लस टैक्सेस, सो इट्स नॉट 3500. ठीक है. सो ऑन दैट नोट, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर इंटरव्यू, mock interview sessions. Who would like to go first? Udit is saying. So I'll just tell you what I'm going to do. So for example, Udit is saying that he wants to go for the mock interview, right? So I have a notebook here. You guys have to, whosoever wants to go for it needs to start their video. So Udit, I request to please start your video so that we can have one-on-one interaction. Thank you so much. ठीक है. तो usually when you conduct mock interview, it's recommended that you come in certain proper formal attire so that you can sort of anticipate what kind of comfort in terms of clothing also you will get when you'll be actually appearing for the interview, right? But it's fine, Udit. So I'll be taking interview and I'll be noting down all the points that I have, any improvement areas that I want to suggest you. ठीक है. And then towards the end when we finish, I'll be discussing all of that कि कहाँ पर आपने mistake किया, कहाँ पर आपको improvement का scope है. And mostly 2 ही चीजों पर, मतलब 2 से 3 चीजों पर मैं focus करूंगी. Technical knowledge, not so much, but I'll definitely ask technical questions. So it's going to be a combination. I'll tell you the process that is currently happening off campus. Campus का जो process है, that's entirely different, right? But I'll tell you about on campus. Off campus. So off campus, if you're not in the existing city, for example, there is a vacancy in Mumbai and you're not in Mumbai, or let's just say from Delhi. So what they'll do is they'll conduct one telephonic round of interview and they'll ask basic questions, basic HR questions. Tell me something about yourself. Why do you want to work with Deloitte, or why do you want to work in this particular profile? And that's all. And then you'll get proper face-to-face ka, like a virtual interview ka invite. Always check for the CC member. Always check the profile of the CC member. And most likely the person who's marked in CC is the one जिसकी टीप आप ज्वाइन करने वाले हैं या फिर जो आपका इंटरव्यू टेक्निकल वाला लेंगे. आजकल प्रोसेस क्या है, बहुत फास्ट हो गया है. सो 2 राउंड्स में जो है खत्म हो जाता है, प्लस लाइक 1 टेलीफोनिक राउंड. सो 3 राउंड्स मैक्सिमम, राइट? So telephonic, then technical, which is like hardcore technical, and then final wala with the partner. If you are being called to the premises of the organization, right? I'll tell you one recent example that happened. One of my students, she got placed into PwC, right? So she was called to Pune. So wahan par she had to give like 5 rounds of interview. That was in EY, I think. 5 rounds, like एक दिन में. She went from Mumbai to Pune. वहां पे पूरा दिन बैठी, पहुंची वहां पर venue पे, premises पे.
And then first round basic HR, then technical, then one more technical, then one more technical, like 3 rounds of technical interview in one single day. So Dhruv was quick enough to change the attire and come in formals. Good job, Dhruv. तो क्या है कि वो सेम डे डिसीजन लेने का कोशिश करते हैं अगर आपका प्रेमिसेस पे होता है तो, बट शी हैड अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू लाइंड अप, सो शी हैड टू लीव एंड देन शी गॉट द कंफर्मेशन लेटर, राइट. सो लेटर ऑफ इंटेंट यूजुअली इशू हो जाता है इन केस अगर आपका रिजल्ट से पहले इंटरव्यू होता है तो लेटर ऑफ इंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है. So we'll be taking up all these doubts, guys, but today's session is about interviews, so we're going to stick to interviews. I'm receiving all these doubts about group discussion, and group discussion is a very interesting step in the entire interview process. Personally, my favorite, because you get to see, you know, different colors of a person in the group discussion, but that's for another day. Let's stick to mock interviews today. So we are going to start with Udit. Udit, I am unmuting you. So guys, we are officially now kicking off for our first mock interview for the session. So hi Udit. Can you Good tell me evening, your full ma'am. name? Udit Maheshwari. Udit Maheshwari, right. So अभी start नहीं कर रहे. I'll tell you officially when we are starting. So Udit, कौन सी company में आप, what is your dream company? Tell me. PwC. PwC, which profile? Statutory audit. Stat audit. Okay. So let's go ahead. Just a second. So we're officially starting now. Hi Udit, how are you doing? I'm good, ma'am. So Udit, tell me something about yourself. Hello, ma'am. I'm Udit Maheshwari. I was born in Kotdwar, Uttarakhand. I did my schooling from St. Joseph's Convent School, and after completing my schooling, I enrolled into CA curriculum, and so far I have completed my intermediate course. Now I am a CA analyst, and I am looking for my admission. My hobbies are cricket and volleyball. Why do you want to work in statutory audit? Statutory audit was the because it is a vast field, and it includes so many things like taxation also and other accounting fields as well. And in my academics as well, I was good in auditing, and that's. Okay. Why do you want to work with PwC? Why not any other firm? Because PwC has a very good work culture, and it's has good ethics, and So Udit, tell me, why did you choose CA? Why did you choose to pursue CA? There are so many professions available. because CA is one of the most renowned courses in the field of commerce, and it has not only good reputation but also gives vast knowledge to the person, and it has a great opportunity for someone which is just about 19-20 of age and have to work like a professional. I like that part, and for that reason I chose CA. Can you tell me the steps involved in carrying out an audit program? The steps include: first, we will check the business process of the company. And the next step would be checking the internal control system of the company, which we are auditing. And after checking how the controls were applied, the implementation and the design of the controls. After designing the controls, we check the substantive procedures. We design the substantive procedures which are going to be applied by the auditor, and
after applying those procedures, we would be concluding about it by reporting. Okay, right. Do you know how to work on MS Excel? Sorry? Yes, ma'am. Yes, okay. Right. So tell me, how do you apply a VLOOKUP? Where do you apply a VLOOKUP formula? VLOOKUP formula is applied uh, on when we are going to search for some searching about rows or columns simultaneously, and sorry ma'am, I'm not able to explain the whole thing. I will look into it. हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं. VLOOKUP फंक्शन में हम सर्च करते हैं रो एंड कॉलम वाइज, और उसमें स्टार्टिंग में हम जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो Okay, no worries. So sorry. no worries, no worries. Don't worry. I understand that you're a little nervous. Tell me audit assertions on the balance sheet level, like name a few assertions on the balance sheet level. Yes, ma'am. On balance sheet level, we check completeness, existence, and valuation, and okay. Right. So, Udit, you know, PwC has huge demands from its articles. You'll have to stay late night, and there are days wherein you'll be like working really like day in and day out, especially during the peak season. Yes, so do you think you'll be able to manage all of that? yes, ma'am. I think I would be able to manage that, because so far I have also experience of working in my father's business as well. While studying of former intermediate, I was also helping my father out in few of the activities involving like managing the work of in the business. So I was able to manage the work as well as my studies simultaneously. So I have good time management and people management skills as well. Okay, now that you say, and now that you say it, your articleship, your studies, and your father's business, how will you manage the three things? No, I have that time management skills, so I can well do that in my articleship as well. That's what I'm saying. See, Udit, we are looking for a candidate who can fully devote self to the work, right? So, will it be okay if we ask you to not get involved in your father's business and be totally? Yes, ma'am. I'm fully ready about that. Yes. Okay. All right. Do you have any questions for me? Yes, ma'am. How is the culture in? What do I expect in the days in which there are hectic conditions, like you said just right now? So, how much late do we have to stay on those days? Okay, you're asking how late do you have to stay back in the office? Yes. I mean, it can go up to 1, 2, depending on the work. So, yeah. Yes. Okay. Right. Thank you so much, guys. उदित ने इतना ज्यादा इनिशिएटिव लेके गट्स लेके इंटरव्यू दिया है, और ये तालियों की गड़गड़ाहट मुझे ना यूट्यूब पे दिख रही है ना जूम चैट में दिख रही है. अपने जो पियर हैं, जो साथी हैं, उनका हौसला बढ़ाइए, थोड़ा तालियां बजाइए उदित के लिए. उदित डिड अ रियली गुड जॉब, एंड आई बिलीव उदित दिस वाज योर फर्स्ट एवर इंटरव्यू इन लाइफ. Yes, ma'am. This was right. So good job, really good job, really impressive with it. Definitely. देखो, मैं तो definitely थोड़े critical points दूंगी आपको, because I want the best of you, right? So yes, let's just start with that. Yes, people are waiting for my inputs, correct? So I'm gonna start with the starting, right? So Udit, you started with your intro, and your intro was a little bland. Bland मतलब उसमें मुझे कुछ मसाला नहीं दिखा, ठीक है? So when you're telling your intro, it has to be like a कोई मूवी का इंट्रो, राइट? आई मीन आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट कि आपको इनैक्ट करना है, वहां पर आपको पूरा हीरो वाला माफिक एंट्री करना है, बट आई वुड ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू हैव टू ऐड अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन
अभी क्या है, थोड़ा प्लेन वैनिला टाइप लग रहा था, मैंने फाइनल किया है, आई एम लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप. आई मीन any other person, if I pick any other person who is looking for an articleship right now, उसका भी सेम ही आंसर होगा. बट हाउ इज उदित गोइंग टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिहिर शशांक यहाँ पर सेम ही तो बोलेंगे, पर उदित में क्या अलग है, तो मुझे अलग सुनना है. ठीक है, सो आपका जो आंसर है, मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, एंड एवरीबडी प्लीज whosoever is going to appear for interview, please note down the structure. This is very very important when you are writing an introduction for yourself. सबसे पहले obviously it has to start with your name, right? Then you have to talk about your current thing. अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करना है, राइट? ठीक है, और अगर आपने आर्टिकलशिप करा है तो आपको अपने एजुकेशन से स्टार्ट करना है, राइट? एंड देन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बोले तो लेटेस्ट फर्स्ट. ठीक है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल मिहिर को मैं मान रही हूँ मिहिर क्वालिफाइड है. मिहिर क्वालिफाइड हो क्या? कोई क्वालिफाइड है, मैं उनका एग्जाम्पल ले सकूं यहाँ पे? क्वालिफाइड सीए, आई थिंक अतुल निगम यहाँ पर क्वालिफाइड थे, राइट? आरती वैभव, ठीक है. सो सीए अंशुल, चलो सीए अंशुल भाई, जो सीए हैं वो अपने नाम के आगे सीए लिख लें, बड़ा अच्छा लगेगा. ठीक है, तो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ सीए अंशुल, राइट? सो अंशुल जो है, अब यहाँ पर सबसे पहले वो बताएंगे दैट आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन इमीडिएटली ही हैज टू टॉक अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. लेकिन अगर आप आर्टिकलशिप में हो तो आपको अपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एजुकेशन के बारे में बात करना है. ठीक है, कि मैंने पहले इंटरमीडिएट क्लियर करा है, मेरा उससे पहले बीकॉम का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है निकल चुका है. इससे पहले मेरा क्लास 12 था, फिर मेरा 10 था, 12th में मेरे इतने परसेंटेज थे, इतना मेरा जो अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस था. देन यू कम टू योर फैमिली, राइट? इन योर फैमिली यू हैव टू टॉक अबाउट योर फैमिली. मतलब लोग बोलते हैं फैमिली की क्या जरूरत है, नो, दे वांट टू अंडरस्टैंड योर फैमिली बैकग्राउंड बिकॉज दे एनीवे विल कंडक्ट बैकग्राउंड चेक्स. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव फैमिली इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट. सो फैमिली के बारे में, मदर फादर क्या करते हैं, इफ योर फादर इज इन द कॉर्पोरेट, मेंशन द पोजीशन दैट ही इज होल्डिंग. मदर के लिए हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की जगह आपको होम मेकर बोलना है. दैट्स अ बेटर वर्ड, दैट्स लाइक कॉमनली यूज्ड नाउअडेज. Then you can talk about your siblings. If your siblings are also working in like corporates या फिर कॉलेज में, do mention that, right? जहां पर भी आपको ब्रांड दिख रहा है ना, वो ब्रांड को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो अपने आंसर में, इंट्रोडक्शन में. देन यू हैव टू टॉक अबाउट योर हॉबीज. ये जो है ना, ये आपका डिस्टिंग्विशमेंट फैक्टर होगा. ठीक है, तो हॉबीज में टायर्ड हॉबीज नहीं डालनी है कि मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे इंटरनेट सर्फिंग करना पसंद है. नहीं, थोड़ा हटके कुछ बोलना है आपको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लाइव इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट मास्टर क्लास करा था, वहां पर एक स्टूडेंट था, ही वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ फाइंडिंग लूप होल्स इन द सिस्टम्स, right? So what he used to do is he used to find loopholes in those systems and he used to go to reach out to the brands and then tell them that this is the loophole. If I tell you, pay me money. For example, he found a loophole in Zomato, right? So what he did, he told them and then he got some compensation from them. Then he fought against one university because उन्होंने क्या है, फीस लेकर confiscate कर लिया था, बच्चों को refund नहीं किया था. So he fought against that. So he used to mention all of these crazy things in his introduction in the last part. So what you guys can do, अब आप बोलोगे कि मैम हमारी लाइफ तो बहुत प्लेन थी, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी नहीं था स्कूल लेवल पे, राइट? तो सीएस को देखो, सीएस को इस लेवल पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका वर्क एक्सपीरियंस काफी कुछ बोल देगा. आपने अपने आर्टिकलशिप लेवल पे जो भी अच्छे काम करे हैं उनको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इंक्लूड करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम लेट्स जस्ट से XYZ company, right? XYZ LLP. Then you have to mention don't mention client's name, mention the major assignments that you handled. For example, I assisted and I carried out the concurrent auditing of like this one of the top firms in the bank, which was like having funds let's just say 500 crores. और या फिर जो है आपने जो है किसी स्टॉक मार्केट कंपनी का जो है ट्रेडिंग कंपनी का आपने करा, उनका AUM जो था, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था, वो लेट्स जस्ट से 10,000 करोड़ का था. तो ऐसे ऐसे फिगर वाली चीजें आपको इंक्लूड करनी है. दिस इज फॉर ऑल द सीएस इन द हाउस हियर. ठीक है, तो आर्टिकलशिप का बहुत बहुत ज्यादा आपका फर्क पड़ेगा. वो पूरा दिखा देगा कि हाँ आपने क्या काम करा हुआ है. एंड टेक्निकल सीए लेवल पर टेक्निकल बहुत ज्यादा मैटर करता है. इंटरमीडिएट लेवल पर मैं बोलूंगी इतना नहीं मैटर करेगा, बिकॉज आपसे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती हैं. सो दैट लाइक आई एम जस्ट लाइक रिवाइजिंग द स्ट्रक्चर फॉर यू गाइज. सबसे पहले नाम से स्टार्ट करना है. अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड देन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देन फैमिली, एंड देन अबाउट योर हॉबीज. ठीक है, अगर आप सीए हैं, क्वालिफाइड सीए हैं, नाम,
अपना रीसेंट क्वालिफिकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस, और फिर अगर आपका शॉर्ट है वर्क एक्सपीरियंस, ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो आप अपना एजुकेशन, कुछ अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई अच्छे मार्क्स आए थे, कोई एकेडमिक अचीवमेंट था, उसके बारे में, फैमिली, and then your hobbies, right? So this is the entire structure of your introduction. Please work on it. Okay, my battery is exhausted for this. Just a second, guys. I think my video is off now. So मैंने अपना FaceTime camera on कर लिया. Is it visible? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ. So yeah, so this is the entire structure for your introduction, ठीक है. Now coming on to why start audit. तो देखो, vast field है, there are so many things to do. हर फील्ड में बहुत सारी चीजें होती है उधर काम करने के लिए, ठीक है. तो थोड़ा स्पेसिफिक आंसर करो, थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज ऐसे कर सकते हो, दैट यू नो I first got to know about the statutory audit field and the kind of work that we do through audit masterclass, right? Before that I was like, okay, this auditing is a subject, but I got to know about it because I understand आपके आंसर की वजह से मुझे समझ आया आपके पास audit masterclass है. Correct me if I'm wrong. I have watched just 3-4 lectures. Okay, but yeah, you are a student, right, of audit masterclass, right? तो वो आंसर से पता चल जाता है, तो आप उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो. एंड I was totally impressed with the kind of work that I'll get to do in the start audit department, right from planning the entire audit program to carrying out test of details, test of controls, and then implementing all of those, and connecting with the top management. And I found all of that work to be very interesting, very comprehensive, and it'll be a great learning challenge for me to explore a field as dynamic and vast as statutory audit, right? थोड़ा सा मैंने एनर्जी डाला, मैंने थोड़े से कीवर्ड्स डाले कि मुझे पता है इस फील्ड के बारे में. आई एम नॉट अ नूब, राइट? दैट इज व्हाट आई हैव टू शो, एंड देन यू कैन मेक योर आंसर. और दूसरा क्या एंगल हो सकता है, यू नो, आई हैव अ फ्रेंड हु हैज बीन working in statutory audit department. He's like my senior and he's working with one of these firms. मान लो PwC में ही काम करता है वो. And he keeps telling me about all these different stories from his work, that he gets to do such crazy assignments. He's getting to meet all these top managements at such a young age, which is very inspiring. And I'd also like to be part of that camaraderie, wherein I'll also get to work along top brilliant minds, and that'll be very exciting. And that's why I'm really passionate about statutory audit as a field to work in. You have to show your passion for the field. And ठीक है, तो जब तक आप पैशन शो नहीं करोगे उनको, हमें डेस्पिरेशन नहीं शो करना है. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस. हमें ये डेस्पिरेशन नहीं शो करना है कि भाई आर्टिकलशिप दे दो यार, तुम्हें क्या जा रहा है, बच्चे को दे दो आर्टिकल, ये नहीं. You have to very sophisticatedly show your passion, that I'm really passionate about this field. Coming to PwC, again, गुड एथिक्स. जैसे ही आपने बोला, मेरे दिमाग में सत्यम का केस चलने लग गया. मैंने कहा सत्यम के केस में ही तो PwC फंसी थी, ऐसे कैसे गुड एथिक्स. तो एनीवे, गुड वर्क कल्चर, दैट वाज अ गुड पॉइंट, कीप इट, बट ऐड मोर पॉइंट्स. ठीक है, अगर आपका कोई रेफरेंस ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसके एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हो. लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि अगर मेरा कोई रेफरेंस काम कर रहा है तो मुझे उसके बारे में इंटरव्यू में बात करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए. उससे दिखता है कि आपका नेटवर्क काफी वास्ट है एंड यू ऑलरेडी हैव पीपल हु आर वर्किंग. तो एक वो होता है ना कि जैसे ही आपकी संगत होती है वैसे ही आप बन जाते हो. तो इट काइंड ऑफ गिव्स दैट इंप्रेशन दैट इफ यू हैव सच फ्रेंड्स, यू आल्सो हैव that composure that you'll be able to work in such an environment, right? So you can talk about, you know, my friend keeps sharing stories how his seniors are so supportive, how he gets to how he gets to learn so many things. So आप वो add कर सकते हो. If not, then you can tell that, you know, I read on internet and I read on Glassdoor, there are so many good reviews about the company and the kind of work that I'll get to do, and the team that I'll be, you know, involving in. And तुम जो इंटरव्यूअर हैं उनका भी एक एग्जांपल बोल सकते हो कि दैट, यू नो, इफ आई विल बी जॉइनिंग योर टीम, यू हैव सो वास्ट एक्सपीरियंस एंड मुझे आपसे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा कुछ करके आप फ्रेम कर सकते हो. ठीक है. ऑडिट प्रोग्राम, आंसर लाइक 90% करेक्ट ही था. यू वर लैकिंग वर्ड्स. एक जो चीज थी ना, जो मैंने नोटिस करा आपका, देयर वर अ लॉट ऑफ आर्स एंड अम्स इन योर स्पीच. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आई अंडरस्टैंड दैट वाज आउट ऑफ नर्वसनेस,
which is fine. And this was your first ever interview, so which is all the more fine. Now, next time, when you will see, मेरे भी R's and Ms निकलते हैं, but because I'm in a very candid conversation, but yours is a rather prepared speech, right? क्योंकि आपने ये याद करा है ये सब, तो उसमें R's and Ms आप कैसे reduce कर सकते हो? Okay, I'll ask you to now introduce yourself once again, right? पहले आपके introduction में भी R's और Ms थे. Now you have to introduce yourself once again, and you have to speak very slowly. ठीक है? Try to avoid R's and Ms as much as possible. Speak very slowly and take time and then speak. ठीक है? Slow speech रखना. Just introduce yourself. Hello, good evening. My name is Udit Maheshwari, and I am from Fort Dwara, Uttarakhand. I have recently completed my intermediate, and I am from St. Joseph's Convent School, Fort Dwara. ओके रिलैक्स. सो अभी क्या है कि आप अपने आंसर को वो करने लगे थे, इम्प्रोवाइज करने लगे थे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आई गिव, बिकॉज पहले आपने नहीं बोला था. एसी का रिमोट का है यहाँ पे. तो मैं आपको बस यही दिखाना चाहती थी कि जब आपको आंसर पता है और अगर आप अपनी स्पीड स्लो कर दोगे, दिस हेड्स अप इज फॉर एवरीबडी कि अगर आपको आर्स और आर्म्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं अपनी स्पीच में, यू हैव टू जस्ट लोअर द स्पीड ऑफ योर स्पीच. ठीक है? अगर आप उसको लोअर कर दोगे, धीमे बोलोगे, अपने आप जो है आपका कंपोजर मेंटेन रहेगा. मूविंग फर्दर, असर्शन वाला पॉइंट भी आपका ठीक था. वी लुकअप. अब क्या है कि वी लुकअप फॉर्मूला मैं गाइस बता रही हूँ, वी लुकअप फॉर्मूला अगर मैं उदित को दे दूं ना, एक्सेल की लगा के दे दो, ये फाइन, ये कर देगा. लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? एक्सेल के क्योंकि हमने फॉर्मूला सीखा है, हमने ये तो सीखा ही नहीं कि उसको इंग्लिश में बोलना कैसे, कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है, राइट? तो देखो 4-5 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. वी लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है आपका, पिवट है, तो एटलीस्ट इन सब का आपके पास कीवर्ड होना चाहिए कि इंडेक्स है, जो आपका सर्च है, एरे है. ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स वही है जो डेली बेसिस पर उन्हें दिख रहा है, वो फंक्शन कर रहे हैं. ठीक है? तो वो एरे, कीवर्ड, सर्च रेंज, ये सारे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे. तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना आंसर फ्रेम करने के लिए कीवर्ड्स चाहिए ताकि आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर सको. ठीक है? तो ये मेरा आपके लिए फीडबैक है. असर्शन वाला ठीक था. लेट सिटिंग वाला देखो, हम एक चीज वर्ड यूज करते हैं, ड्राइविंग योर ओन इंटरव्यू. तो आपके जो आंसर आएंगे उसी में से मैं सवाल पूछूंगी. आपने मुझे नहीं पता था आप अपने फादर के बिजनेस में काम कर रहे हो, आपने मुझे आंसर दिया. आई मीन डेफिनेटली इट शोज दैट यू हैव बीन वर्किंग, बट एट द सेम टाइम कभी कभार बैकफायर भी हो सकता है. ठीक है? नॉनदलेस डू मेंशन इट बिकॉज इट विल शो यू कि आप एकदम नूब नहीं हो, बट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई. जैसे मैंने आपको पोक करा उस पॉइंट पे, तो यू लाइक हाँ मेरे को आप, बल्कि पर आपको ये मेंशन करना चाहिए था कि माय फादर्स बिजनेस इज रादर settled, it's a family business, they have like a lot of people here, so I used to just give my additional inputs there, right? And even if I'm not there, the business is well managed, my father is there to take care of it, so I won't be needed there much. So I want to focus on my work experience, and that's where my focus is going to be for the next 3 years. इस तरीके से बस आप उसे modify कर सकते थे. Rest really good, or that good confidence, but definitely there is a scope of improvement, and I wish you all the best कि आप और अच्छे से अपने answers frame करें और improve करें. Right. Let's move further. Thank you so much. Thank you so much. So next was, let me see, कौन थे next? Mihir. Mihir, are you there in the chat? Okay, right. Let's start with Mihir. Mihir, CA है कि आर्टिकलशिप के लिए है? आर्टिकलशिप के लिए. चलो अभी कोई सीए है जिसको अभी इंटरव्यू देना है? ओके, सो मिहिर एक काम करते हैं. मिहिर कहाँ गए तुम? हाँ, पहले एक सीए को लेते हैं, 3rd नंबर पे आपके पास आते हैं. ठीक है? सो अंशुल इज देयर. अंशुल, कुड यू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो? आई कांट सी अंशुल. ओह या, हाय, आई कैन सी यू. अच्छा, इतनी देर से मुझे अंशुल लग रहा था, बट अंशुल लग रही है. ठीक है. अंशुल, आई हैव, या राइट जी. कैसे हैं आप अंशुल? बढ़िया. तो अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया आपने? यस मैम, इन May 23. ओके, चलो भाई, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन आने चाहिए. सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो अंशुल को. क्या बात है. थैंक्स एवरीवन.
राइट सो अंशुल कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो आप? डिपार्टमेंट एंड कंपनी? बी स्पेसिफिक ऐसा कोई कंपनी नेम तो नहीं है, बट मुझे इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड है. ओके सो यू वांट टू वर्क इन लाइक एफपीएनए और हाँ, FP&A फील्ड मिल जाए, या फिर मतलब स्टेट ऑडिट को छोड़ के फाइनेंस फील्ड है, मैनेजमेंट फाइनेंस ट्रेनिंग. फील्ड में जाना चाहते हो? ठीक है ठीक है. ओके सो इससे पहले आपने आर्टिकलशिप कहाँ से किया? फ्रॉम विकेलेट एंड एसोसिएट्स, उज्जैन, MP. ओके ओके ठीक है राइट. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. तो कंपनी स्पेसिफिक सेंस नहीं है, सो वी आर गोइंग टू just stick to basic questions and little bit of questions for FP&A accounting, और उसमें वो सब होगा, ratios वगैरह होंगे. ठीक है, so let's start. Good evening, Anshul, how are you doing today? I'm very well. Please start with your introduction. Okay, I'm Anshul Jain. I'm from Ujjain. I completed my articleship from Vikelad and Associates, Ujjain itself, Madhya Pradesh. It is a mid-sized firm. It having 11 partners in a firm, and I'm seeking for an opportunity. I recently completed my MCOM. Fourth semester's results are pending yet, but I completed BCom honors from Vikram University, Ujjain, and also completed my MCOM from Vikram University, Ujjain. I think so. Okay, could you talk a little bit about your work experience? I done in the field of statutory audit, taxation, GST audit, and state audit in listed companies, including listed companies, manufacturing companies, and बस इतना ही करा है, ज़्यादा तो कुछ नहीं करा है. Okay. इंटरनल ऑडिट भी करे हैं, इंटरनल ऑडिट में भी काम किया है. Okay, what kind of work, what was the entire work process of carrying out an internal audit program? Internal audit program, first of all, we have to check each and everything. The first step is to check the opening balances, start from the opening balances checking, and then ESIC, PF, salary, purchase, sales, or purchase sales, and each and every part of the company which the company is doing, we have to check that in internal audit, and internal control procedures and all. Okay, can you tell me what is the debt equity ratio and its significance while drafting or while preparing all the ratios? Debt equity ratio, ideal ratio is 1:1, and the significance is to that no company raise so much of debt, so that the main objective of debt equity ratio is that company manage its debt in comparison to its equity, so that they can't trouble in debt trap. Are you sure it's 1:1? I think it's 2:1, the ideal ratio. Ideal ratio is, I think I'm a little bit confused right now. I think it's 1:1. Okay, no problem. Tell me, what is EBITDA? EBITDA. Yeah. EBITDA is earning before tax and interest and debt. But what is the main significance? I can't recollect right now. Okay. Can you tell me in a cash flow statement, what is the importance of non-cash items, for example, depreciation? Importance. Yeah. In cash flow statement, we generally not included depreciation because it is a non-cash item. Depreciation doesn't have any cash flow inflow or outflow. That is, we excluded from in the cash flow statement. Okay. Do you know how to use MS Excel? I mean, yes. Okay. Can you tell me what is the use of pivot table? How do you use it? What's the form? Pivot table, we have to categorize or bifurcated the things I want to give an example which I use in my articleship experience, is that in pivot table, I have to find out the purchase parties. For example, we have to reconcile that GST 2RB with the tally data. Then we use
pivot table to bifurcate the party's name and to find out the total sum of the party's purchase amount or anything else. Or matlab generally we use pivot table to reconcile the GST or 2B with tally data. Okay. Okay. Tell me, what is the difference between marginal costing and fixed costing? Fixed costing and marginal costing. Yeah. I can't recollect it right now exactly. Okay. Okay. No problem. So, okay, tell me, how do you compare the budgeted items versus the actual items, and how to analyze this data? Like, what kind of analysis would you perform in this? Budgeted item with actual item. First of all, we have to see the exact policies of the company, that what they estimated about that the data, and then we perform our internal audit procedures to check what is the actual item, what is the price of the actual item that is, and then we have to analyze it from the market actual prices. Is it match with the market prices or not? And if there is a differences, then we ask from the management why is there is so much variances in this. Okay, right. Correct. So, Anshul, why do you want to work with our company? Because it is one of the renowned company, and from my sources, I get to know that your company has a good working culture, and they also give importance to their employees. I think so. It is one of the point. Okay. So after qualifying CA, why do you want to work in industry? Why not go for traditional practice, Indian side of Big Fours, or maybe explore, USI in Big Fours? I don't want to go in Big Fours, and I don't want to practice. That's why I want to go for jobs in industry, because in industry there is a good working culture, and there is a lot of growth opportunities in industries as compared to Big Four. So you're saying there's no growth in Big Fours? No, I'm not exactly saying this. There is almost growth in Big Four, but as compared to Big Four, I think in industry there is a more chances of growing. And in industry, many backgrounds, for example, technical, management, and all are interact in industry. Okay. That's all from my side, Anshul. Do you have any questions for me? No, ma'am. Okay. गुड जॉब अंशुल भाई. सबसे पहले तो अंशुल का हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद अंशुल की हम थोड़ी सी डांट भी लगाएंगे, है ना? तो पहले हम थोड़ा तारीफ कर देते हैं फॉर टेकिंग इनिशिएटिव इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल हियर. 100 पीपल आर वाचिंग दिस, राइट? लाइव, यूट्यूब, जूम, सब चीजें मिलाकर 100 लोग देख रहे हैं, एंड स्टिल टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ कि भाई आज तो तू दे दे इंटरव्यू, देखी जाएगी, लेट्स सी व्हाट इज योर लेवल, एंड because it's only going to improve from here, Anshul, right? Make a note of that. Correct. Let's start with introduction. Introduction में, like I mentioned, you अभी जैसे मैंने, चलो ठीक है, immediately मैं expect नहीं करती कि अपना जो answer है उसको immediately improvise करो, but your answer needs restructuring, especially the introduction. आपने उसमें अपने आर्टिकलशिप के बारे में बताया, 11 पार्टनर्स हैं, नाम बताया, आपने एमकॉम, मतलब क्या है कि फिर आपने पहले एमकॉम बता दिया, फिर आपने बीकॉम का बता दिया. यू डिडंट रियली टॉक अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. फिर जब मैंने आपको बोला कि आप हमें वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, आपने बोला स्टार्ट ऑडिट किया है, टैक्स किया है, जीएसटी ऑडिट किया है, लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग का किया है, बस इतना सा ही करा है. एक तो ये इंग्लिश चलते चलते ये जो फ्रैंकनेस बीच में आ गया ना, थोड़ा सा बैकफायर कर सकता है. सम इंटरव्यूअर्स आर ओके विद इट. फॉर एग्जांपल, मैं अगर होती तो आई वुड हैव नॉट minded it that much, but क्या पता कोई strict interviewer हो, right? And he may not like it. And तो आपको जो है थोड़ा सा वो sophistication throughout the interview maintain करके रखना है. फिर आपने बोला internal audit program किया है,
बेसिकली क्या है, आपके पास दिमाग में यहाँ पर सारे आंसर हैं, पर वो शब्दों के फॉर्म में निकल नहीं रहे हैं। एंड वो क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि आपने जो आपके आंसर्स है, पहली बात आपने उन्हें नोट नहीं किया है, लिखा नहीं है ना अभी तक आंसर्स को। यू हैव टू नोट डाउन ऑल योर आंसर्स. आई स्टिल हैव दैट नोटबुक व्हेन आई फर्स्ट अपीयर्ड फॉर माय इंटरव्यू. ऑल माय आंसर्स वर रिटन इन दी फिज. मैंने अपने हाथ से लिखा था, क्योंकि उस टाइम तो इतना लैपटॉप और उसका वो नहीं था. आजकल तो सब लोग लैपटॉप पे अपने आंसर्स वगैरह लिख लेते हैं, कभी भी मॉडिफाई कर लेते हैं, राइट? So Chaitanya is asking, can they brief about the clients? No, we never talk about clients. We talk about industry. क्योंकि client का नाम जो है वो confidentiality वाला factor होता है, ठीक है? तो clients का नाम आपको कभी भी नहीं लेना है. You can talk about, certainly you can talk about the industry. तो industry, अगर आपने manufacturing करा है तो manufacturing industry में अगर जो कंपनी थी अंशुल फॉर एग्जाम्पल जिसका आपने किया है, उसमें आप टर्नओवर बता सकते थे, राइट? और आपने क्या क्या फंक्शंस पे जो है काम किया, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ होगा, या फिर आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, क्योंकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग का तो आपने नहीं करा होगा ऑडिट, राइट? देयर वर सर्टेन फंक्शंस दैट यू वर टेकिंग केयर ऑफ, बट मुझे नहीं पता चला आपके बात करने से कि आपने एक्चुअली काम क्या करा है. मुझे ये पता चला हेड्स, आपने किस हेड्स के अंदर काम किया है, बट मुझे आइडिया फिर भी नहीं लग पाया कि आपने क्या क्या काम करा हुआ है, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देयर. टेक्निकल आंसर्स जो आपको स्ट्रक्चर करने में और मेहनत करना है. एंड आई बिलीव क्योंकि अभी अभी हाल ही में सीए निकला है तो थोड़ा मौज बाहर चल रही है, तो ब्रशअप सिलेबस हुआ नहीं है, ठीक है? तो टेक्निकल तो अंशुल नाउ यू हैव टू लाइक गो फुल इन. एंड जो आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो जो मेरे सवाल थे वो एफपीएनए प्रोफाइल वाले थे. तभी मैंने आपसे पूछा था आप कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछूंगी. तो टेक्निकल जब क्लियर होगा, राइट, टेक्निकल जब टेक्निकल स्ट्रांग होगा तो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स ऊपर नीचे होंगे ना अंशुल, तो भी चलेगा, ठीक है? तो टेक्निकल बहुत स्ट्रांग करना है. यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग द सिलेबस. एंड स्पेशली लाइक यू नो जो हमारी थिंकिंग पिच की, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एफपीएनए प्रोफाइल के लिए, आप उनको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है गाइस? करियर मास्टर क्लास में जो है, जो जो भी अभी इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, आई हाईली रेकमेंड यू गाइज दैट यू गाइज गो एंड चेक आउट फ्री करियर मास्टर क्लास. इसमें ना आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे. जैसे मैं अगर आपको विजिट करके दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको क्वेश्चंस के लिस्ट, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन का लिस्ट प्रोफाइल वाइज, स्टार्ट में क्या पूछे जाएंगे, इंटरनल ऑडिट में क्या पूछे जाएंगे, टैक्स में क्या पूछे जाएंगे, एफपीएनए की प्रोफाइल, एफडीडी की प्रोफाइल, सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं. इंटरव्यू चीट शीट, जो क्वेश्चंस मैं भी यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो भी मैंने वहां पर आपको दे रखा है. लिंक्डइन चीट शीट दे रखा है. तो प्लीज गाइज आप इस पे साइन अप करके आप इस पे ये सारे रिसोर्सेज जो फ्री में अवेलेबल है, एटलीस्ट इनका फायदा आप उठाइए, ठीक है? एंड राइट नाउ सेल इज गोइंग ऑन. दिस इज जस्ट फॉर एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप अ मास्टर क्लास, राइट? वेरी सून अंशुल हम लोग एफपीएनए की मास्टर क्लास भी लॉन्च करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू गिव यू अ रियली कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर people who are applying for the same position. So you might want to check out that also. हाँ जी उदित, अभी हम इसके बाद मिहिर का लेंगे, उसके बाद आप का लेंगे, ठीक है उदित? So coming back to feedback of Anshul. So Anshul, I believe आपने काम बहुत किया हुआ है, बस उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करना है. अपने सबसे पहले सबसे बेसिक अभी होमवर्क अगर आप पूछो ना मुझसे, इमीडिएट होमवर्क क्या है? जो क्वेश्चन, एक तो अपना पार्ट, ये जो पोर्शन है जो आपका, इसको जरूर देखना दोबारा. आपको पता चलेगा आप कहाँ अटके थे, कहाँ पर आपको जो है कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, कहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस शूट हुआ. कॉन्फिडेंस अच्छा था आपका क्योंकि आपने काम करा हुआ है, बट उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करना है. तो सारे आंसर्स को लिखना है हाथ से, चाहे चाहे लैपटॉप में लिखो, चाहे पेन कॉपी पे लिखो, जैसे आपको ठीक लगे. टेक्निकल आपको अगेन रिवाइज करना है, बिकॉज टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे जितने भी मैंने पूछे, आई वाज मतलब नॉट इम्प्रेस्ड. आई वाज लाइक ओके ठीक है पता है, बट मैं इम्प्रेस नहीं हुई थी, ठीक है? तो इंडस्ट्री में क्यों काम करना है, वाई, तो वो आंसर जो है आई बिलीव आप उसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपने जैसे बोल दिया ना कि आई बिलीव लाइक यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ है एज कंपेयर टू. कभी भी मतलब दूसरे प्रोफेशन को तो डिमीन करना ही नहीं है. क्या पता जो जिसके सामने आप बैठे हो वो भी ऑडिट में से ही उठ के आए हो, स्टार्ट ऑडिट में से उठ के आए हो, राइट? क्या पता उन्होंने भी अपना करियर स्विच करा हो, स्टार्ट ऑडिट से एफपीएनए में गए हो. सो यू नेवर डिमीन अदर प्रोफेशंस, राइट? So what you have to do is just a second. Just a second. Sorry, that was my brother.
हाँ, where was I? I think मैं भूल गई हूँ मैं क्या बोल रही थी, बट हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट योर आंसर फॉर हाँ इंडस्ट्री में क्यों काम करना है. तो कभी भी आपको दूसरे प्रोफेशन को एक तो डिमीन नहीं करना है, और आपको अपना लाइक इसकी तारीफ करनी है बस, कि एफएनए मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है. नंबर्स हैव ऑलवेज एक्साइटेड मी, यू नो, क्रिएटिंग मॉडल्स, फाइनेंशियल मॉडल्स, एंड डूइंग फोरकास्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग that how a business is going to grow in the next coming year. That's something that really excites me, because I want to work in the core business side. I don't want to just audit stuff. I mean, I've done that. That's good work. But I think my calling is in finance, especially in FP&A, wherein I'll be thinking about hardcore business and how to grow it, and also how to control the inefficiencies in finances or any other department that is there. Because पूरा कंट्रोल जो है एफपीएनए की प्रोफाइल, इतना ज्यादा कंट्रोल होता है उनके पास, हर किसी को बजट वही रिलीज कर रहे होते हैं, राइट? हर किसी का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर वो पूरा ट्रैक कर रहे होते हैं. क्या मतलब, दे आर सो नंबर ओरिएंटेड, लाइक इट्स सच अ dynamic domain to work in. Trust me, my friend worked there, but now she's in treasury. So I mean, I think I kind of understand. I've seen how a person can, and she gravitated from stat audit to FP&A. तो अगर अंशुल ये भी रहे ना कि एफपीएनए में अभी आपको, आई मीन दिस इज जस्ट एडिशनल ज्ञान दैट आई एम गिविंग, कि अभी एफपीएनए की प्रोफाइल में किसी अच्छी कंपनी में नहीं होता है. वैसे तो आई रियली विश कि आपका होए, बट यू शुडंट बी यू नो टोटली एप्रीहेंसिव ऑफ द आइडिया कि मुझे स्टार्ट करना नहीं है. बी ओपन फॉर इट, बट डू इट फ्रॉम गुड ब्रांड्स लाइक टॉप कंपनीज. ठीक है? So try to take corporate exposure, and then उसके बाद FP&A में switch easily हो जाएगा, because that's what I've seen a journey like this. So she also did mid-size से articleship, right? Then she did in Deloitte for 1 year, because she knew that she wants to end up in FP&A. Then it became very easy for her to gravitate from audit Big Four to FP&A profile. And she gravitated, in a very like top company. I'm not sure if you've heard of Reckitt Benckiser, the company that makes Dettol, Durex. So I'm not sure if you've heard the name of the company, but it's a very good company to work in. So currently one of our experts is also working there. So on that note, all the best, Anshul. Confidence अच्छा है आपका, since आपने काम करा हुआ है. Just you have to work on the structure of your sentences and be a little more brushed up with the financial topics. Okay? All the best. So we have Mihir next. Mihir, are you ready? Right. हाँ, उदित इसके बाद उदित आप क्वालिफाइड हैं या क्या हैं, एक बार बताइए. मिहिर को अनम्यूट करता है. हाय मैम. हाय मिहिर, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं, आप बताएं मैम. एकदम बढ़िया. Ma'am, before we start, I have a request. Like Yes. I was in the resume masterclass as well. Okay. There's a small request that I was missed on that day. If you could have a look on my CV as well. Yeah. So I'll just tell you, I have received on that day, I have received 100 messages. Okay. So I'm slowly replying to everyone. So अगर आपको reply immediately नहीं आ रहा है, please wait till tomorrow. I'm trying to clear my inbox till tomorrow. So whosoever is waiting for a response from my side, please know that you will get a response. क्या है कि मेरे पास like 150 messages आए हुए हैं, तो I'm like slowly clearing all of them out. ठीक है? Do we have to raise hands for mock interview? No, Chaitanya. So we first come first serve basis पे चल रहा था. When we started, a lot of people noted down कि हमारा लेना है. So we're just going by that order. So article CA, this is the order that we are picking. So abhi CA ka hua tha, now we are going again with, this is the third interview, and this is for articleship. Next we are going to again pick up for a CA. Okay. So okay. See, since this is articleship wala, the next one is going to be for a CA. So अगर कोई CA है, please अपना पहले जो है chat में डाल दीजिए, so I know कि किसको मुझे unmute करना है. ठीक है? So Mihir, कौन सी कंपनी में जाना चाहेंगे आप? I'm currently looking for Big 4 and Big 6 firms for my articleship. There is no specific preference about a firm, but yeah, any firm. But you have to name a company, right? Because अभी क्या है, मैं उसी के हिसाब से questions पूछूंगी. Tell me the company name and profile.
Ma'am, profile I have a preference in statutory audit, and company I would say GT, because I have heard that they have a very good culture. So So stat audit GT, right? yes, ma'am. A really close friend did her articleship from GT Delhi, and really their culture is really nice. They are allotted buddy in the first year, and then with whom they can like ask all the doubts, like they are their go-to person. And the work culture and the seniors are very supportive indeed. So right. So welcome Mihir. How are you doing today? I am very good, ma'am. How are you? I'm also doing well. Thank you so much. Please start with your introduction. Ma'am, my name is Mihir Vijayvargiya. I basically belong to Bhopal. That is my native place. And talking about my work experience, I have actually worked for 3.5 months in an investment banking firm, and I have worked on the financial modeling and on the sales side of acquisition of the companies, and assisted on all these cases, and also assisted on due diligence, etc. After that, talking about my educational background, I have recently cleared my CA intermediate second group, and with that, I have also cleared the third year of my graduation. So with that, I am a graduate right now. And talking about my schooling, I have done my schooling from Bhopal itself, from Mithi Gobindaram Public School, and that is like all about my educational background. Now talking about my family, I live in a joint family. We are around 10, 11 members in our family. And talking about myself, I am the only child of my parents, but I do not miss my siblings because I have a whole lot of siblings in my family. So a whole lot of cousins in my family. So they are like my siblings. So that is that. And after, if I talk about my hobbies and my extracurricular or co-curricular activities, currently I am the student of the year Bhopal branch. And with that, I have also represented my branch at various competitions at regional level. I have been a paper presenter in a national conference. With that, I have also represented my branch as a paper presenter to a college. So yeah, that is in short my introduction. Yeah. Right, that's a very comprehensive introduction indeed. Tell me a little more about the 3.5 months internship that you did in IB. What is due diligence? Ma'am, due diligence, actually, I have not worked much in due diligence, but if I tell you about due diligence, it is basically framing or having a set of questions or set of like, uh, how should I say? A set of questions, I would say. I am not getting the exact word right now. So a set of questions which you prepare like before getting into a talks with the clients on both the sides. So I assisted on that. Right. So you mentioned about financial models, right? Did you develop any models yourself in that duration? I'm not myself, but yes, I assisted my principal, my senior in developing that model. Okay, okay. What was your role exactly when you say assisting? Actually, we were making the model. So I was given a specific part. I had to think about that part. I had to think about the numbers. I had to think about all the realistic numbers and all the realistic possibilities which could be built into the structure, and was told to like put in that model. Okay. So you're familiar with MS Excel, I believe. Yes, ma'am, I am. Okay. Tell me about conditional formatting. How do you use it? Where do you use it? Ma'am, I am not aware of that right now. Okay. So do you know anything about XLOOKUP? Not yet. Actually, ma'am, I am pursuing a course from a course in Excel. So I'm not very fond of Excel right now, but yeah, I have a working knowledge, but not very fond of all the formulas and all. You say that you're not fond of, but you know, your work is going to revolve around MS Excel a lot. Like 90% of your work will be on MS Excel or around suites of MS Office, right? So how would you I do like agree, develop ma'am. the liking towards this? I do agree, ma'am. But like as I told you that I am working on it. I am pursuing that course, and within a week, I would say I will be
in a good working knowledge of Excel to be working with you guys. Okay. Right. So tell me a little bit about uh, substantive audit procedures. Substantive audit procedures. Yeah. I would say substantive audit procedures are the audit procedures which are like when you go in detail, those are the substantive audit procedures. Like first you have test of details and everything. After that, you have to check each and every item. Like you put in sampling, you put in like you select items. What do you want to test in that? Some items you put sampling, some items you want to test in detail. So according to me, those are substantive audit procedures. Right. So Mihir, what is the difference between walkthrough and control testing? Ma'am, I would say walkthrough is like an observation or looking into the whole workflow of that thing, like of a whole process. And what is the second thing which you told? Sorry. Control testing. Control testing, ma'am. It is actually testing the control which is basically put on the process. So controls are, as we all know, controls are of three types. So whichever type of that control is, we are actually testing that control, right? How is the efficiency of that control? Like, is it able to prevent or detect or manage the risk which could be manage the material risk which could be arising of that process on which the control is put in. Why did you choose CA as a profession to pursue? And why CA is that because I have a very keen interest in accountancy. With that, I think that I am good with numbers. And when I completed my 12th, my schooling, I was actually looking for a course which can challenge me personally, which can have a good which can give me a good challenge to crack in. Like if you see in commerce background, CA is like known to be the apex degree in commerce. With that, I am also pursuing graduation, that is for sure, but everyone does that along with CA. So that is that. But I wanted to challenge myself, and that is why I wanted to pursue CA. And if you ask that why commerce, so as I told that I am good with numbers and I wanted to have more knowledge in accountancy, and that is why. Right. So why do you want to work with our company, GT? Ma'am, as I told, like GT has a work culture to be seen, like to be observed and to be experienced. I have talked to my friends in GT, like I have my friends in GT Bangalore, I have my friends in GT Mumbai, I have my friends in GT Noida. They have told me about the working culture, they have told me about the ethics, they have told me about everything which GT offers to you. And talking in general about the big four or big six firms, I have like a blind faith on big six or big four, or specifically talking about GT. I have a blind faith, like if I put in my 3 years in this firm or in your firm, like I will be shaped into a professional person. I will be shaped into a very fine or a very sharp person, like with my knowledge, uh, with my experience, with everything which I will be working in with you. Right. So where do you see yourself 5 years down the line, Mihir? Ma'am, if I tell you that I am not very much aware like how the process works, how the promotion and everything works. This is my first step towards the professional world. So I will get into the firm. I will get to know how the things work in 5 years. But if I tell you, I have a goal like for 3 years, that I will be clearing my CA finals in the next 3 years. After that also, I will be like wanting to work with one of the top firms. Of course, if GT wants to hire me after being qualified, I would love to be hired by you guys. And in 2 years, as a qualified professional,
I don't know what profile or what designation I would be getting, but definitely I would want to get into a good managing department. I would get like to be in a good managing role. Right. That's all from my side, Mihir. Or do you have any questions for me? Yes, I do, ma'am. Yeah. Like, according to me, this interview went quite well. So I think I am going to be working with you. Like, and if and when I will be working with you, what things I should keep in my mind? Okay. See, there is no manifesto that one gets when one joins an organization or joins a specific team, but definitely there are certain expectations in terms of your performance. We'd love you to be taking initiative, to be participating in different assignments where you're allotted, and assisting your seniors in the work, and help us complete the work in the time and meet the deadlines, and obviously deliver best quality to our clients. That being said, there will be times wherein the things will be tough, especially in the peak season, because there's so much work pressure. So at that time, I'd like you to push your boundaries a little bit, and come out as a stronger human being, and come out as a stronger person, because it will definitely be tough on your physical, mental health. So be prepared for that. Okay, thank you so much, ma'am. Actually, I was looking for the pressure, and if you will like talk about me or get to know about me, I am known to take initiatives. So that is lovely to be working with. There is going to be like, I will be delighted to be working with you. Right. Awesome. Thank you so much, Mihir. So on that note, we have come to the end of this interview. Mihir, आपके interview खत्म होने से पहले ही people have started saying, "Good one, brother. Good one, Mihir. Good going. Kudos to Mihir." तो बहुत 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 अच्छा. Your way of speaking is so soothing and so calming, Mihir. I'm pretty sure you must have gotten this feedback multiple times. You're a really good orator. I'm pretty sure you must have participated in elocution or like debates or speeches. Have you? Yes, ma'am. That's a good I reading have right there. represented my branch. Yeah. So a couple of feedback, obviously, because I want Mihir, like, a better version of Mihir, specifically in terms of like appearing for the interview. Technical, on the face of it, I would say you can prepare a lot there. Technical काफी weak था. Basic questions like conditional formatting is one of the most basic formulas. So, but it's fine. See, मैं जो ये बोल रही हूँ, ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ ये दिखाने के लिए कि मिहिर को क्या नहीं आता, पर ये दिखाने के लिए कि मिहिर क्या सीख सकता है. ठीक है, तो हमेशा उस स्पोर्टिंग टोन में मेरे आंसर्स को लेना. डू नॉट थिंक दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग, राइट? ऑन दैट नोट, टेक्निकल एंड MS Excel, प्लीज वर्क ऑन इट. जो आपने वॉक थ्रू और कंट्रोल टेस्टिंग वाला भी दिया, it was quite evident that you are just making sense of the words that I've given you. Like you're just trying to make sense कि अच्छा walk through से लग रहा है overview होगा, control से लग रहा है controls level पर खेलना होगा. That is like taking a shot in the dark. Now this can go in your favor or can totally backfire you. क्या है कि अभी तो थोड़ा सा लग रहा था, but definitely there are terms जो समझ के नहीं लगता है, तुक्का नहीं मार सकते हो. अगर कुछ नहीं आता, straight face, पोकर फेस के साथ बोल दो, I'm sorry, I'm not aware of this right now, but I definitely, अगर कुछ ऐसा है कि जैसे क्या होता है कि लाइक दो सिचुएशन है. एक है कि भाई सुना ही नहीं है नाम क्या होता है, सीधे मना कर दो. दूसरा है कि सुना हुआ है, लेट मी टेक अ गेस, राइट? जैसे आपने ये लिया है वॉक थ्रू कंट्रोल टेस्टिंग, आपने गेस लिया, मुझे बताया, आपने बोला बट आई स्टिल बिलीव माई नॉलेज ऑन दिस इज नॉट 100% करेक्ट. So what I'm going to do is I'm going to get back to you with like proper answer. Email ID, LinkedIn, कहीं से तो बंदा ढूंढ लोगे, and do send them your answers. They'll be really impressed अगर कुछ ऐसा है. But I'll definitely do more research about you and send you the answer on your LinkedIn or email. Commit to them and take responsibility there. बहुत ज्यादा accountability create होती है और काफी अच्छा impression जाता है. ठीक है? और जो नहीं आता, जो ऐसा लग रहा है कि भाई नाम ही नहीं सुना है, ये चिड़िया का क्या नाम है, बिल्कुल straight बोल दो, I'm sorry, I'm not, I don't know this, I'm sorry. ठीक है? Because 100% किसी को भी नहीं आता है भाई, it's fine. Your introduction was bang on. Like I don't think I have any improvements there. आपने खुद like starting में ही mention कर दिया IB की प्रोफाइल का.
तो जो टर्म्स आप बोल रहे हो ना, मेक श्योर उनका आपको मतलब अच्छे से पता हो. लाइक ड्यू डिलिजेंस, पहले आपने बोला मैंने काम करा है, असिस्ट करा है, फिर आपने बोला मैंने उतना भी काम नहीं करा है पर मुझे लगता है ये मतलब होगा. ठीक है, तो असिस्ट करा है आपको, फिर ये क्लैरिफिकेशन देना है, सी आई हैव असिस्टेड बट दिस इज व्हाट इट मींस, लाइक द ड्यू डिलिजेंस, लाइक अ प्रॉपर आंसर. कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाज रॉन्ग, एक्स लुकअप आपने बताया नहीं था. सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, अगेन इट वाज लाइक अ फ्लूक आंसर था, बट ठीक है, चल गया. YCA, really good answer, quite comprehensive, challenging, numbers, all the masala that I could expect, you had included all of that. GT, again, you personalized it, that you have friends working all across India in different branches of GT. Good job done there. 5 years down the line, एक तो managing नहीं, managerial role होता है, so that's the word that you might want to correct there. Then हाँ, मतलब आप थोड़ा सा और उसमें बोल सकते थे कि obviously I want to grow in my profession, like ये मत बोलो कि मुझे नहीं पता कि क्या ग्रोथ प्रोसेस होता है. ठीक है, वो ऑब्वियसली नहीं पता है, बट डोंट मेंशन इट दैट 5 years down the line I definitely want to grow in my profession. First step is definitely to complete my articleship and qualify my CA, and then I'd like to take senior roles and explore more and more, add so many experiences to my credit, conduct, help, or even like lead team, train my team members. Whatever I have learned, I'd love to pass on that knowledge to my juniors and train them and make them good professionals, right? So this is how you can like train, that you want to show that definitely you want to give your best in these 3 years that you have ahead of you, then CA, and then like a little bit about what after CA, some managerial role, like leadership role basically. ठीक है, any questions for me? Question तो ठीक था, ठीक है, लेकिन जैसे आपने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू तो अच्छा ही गया था, तो मैं आपकी टीम में काम कर ही रहा हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बैकफायर कर सकता है. ठीक है, सम मे लाइक इट, सम मे नॉट लाइक इट, तो उसको अवॉइड ही करना है. यू हैव टू बी वेरी हम्बल, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है. ठीक है, सो क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो. आपने जैसे पूछा कि कि what will be the expectations from me, that was a good question. Anshita is asking और क्या क्या पूछ सकते हैं. आप उनसे पूछ सकते हो कि what is the normal day in the life of an article looks like, कि what is the normal day, क्या आर्टिकल की लाइफ में क्या नॉर्मल डे होता है. एंड कुछ आप पर्सनल लाइफ पूछ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक इसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हो इन योर लाइक जर्नी ऑफ 15 years, what was the most challenging project assignment that you've done and what are your learnings from that. I would love to learn from it also. और या फिर आप पूछ सकते हो that what is the growth trajectory for an article, then he's gonna go on to explain the trajectory, articleship, then AM, then जो है असिस्टेंट मैनेजर, फिर डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ऐसे करके जो भी ट्रैजेक्टरी होगा वो बताएंगे आपको. ठीक है, wasn't the introduction a bit long or it's okay? See, the introduction was absolutely okay, I would say, क्योंकि इतना कंटेंट था बोलने के लिए उमेश. मैं मानूंगी थोड़ा लंबा था, बट इंटरव्यू आराम से आप ये मान के चलिए 40 minutes चलता है. ठीक है, जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ 30 to 40 minutes कहीं नहीं गया इंटरव्यू. तो आप सोचो आपके पास इतना सारा है बात करने के लिए. ठीक है, अभी तो हम फीडबैक दे रहे हैं, हमारा फीडबैक मिलाकर भी हम 20 minutes नहीं, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली हैव टू थिंक अबाउट ऑल दी अदर मेंबर्स ऑल्सो. तो इंटरव्यू आराम से 30 to 40 minutes चलेगा एंड यू कैन डेफिनेटली मेक इट दिस लॉन्ग. सावी का कल इंटरव्यू है SNB के लिए. अब आप लोग मुझे ना एकदम इतनी दुविधा में डाल देते हो ना, मैं किस किस को मना करूं. हाँ, बिल्कुल मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करने पे आ गए हैं. मेरा कल डिलॉयट के साथ इंटरव्यू है, मेरा कल SNB के साथ इंटरव्यू है. गाइस देखो, मोटे मोटे आपको फीडबैक मिल गया है कि किस तरीके का इंटरव्यू होगा, राइट. मैंने जो अभी हमने 3 इंटरव्यूज यहाँ पर करे, उससे आपको एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा. अब मैं सबका इंटरव्यू नहीं ले सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैम मेरा कल, उदित बोल रहे हैं मेरा कल डिलॉयट के साथ इंटरव्यू है. ठीक है, सो लेट्स क्लोज मिहिर's इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मिहिर, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी? आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. तो बहुत अच्छा किया आपने. जो छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोना वर्क ऑन इट एंड यू विल इंप्रूव फॉर श्योर. ऑल द बेस्ट. रियली विश दैट यू गेट इनटू GT. Ma'am, I have one question, please. Yeah. Like, ma'am, I have taken the course from Scale 91 about Excel. So, like, I am continuing to watch it, but is it enough for me to crack the interview?
I would say yes. The reason is क्या है कि वो कोर्स अभी लंबा है and I believe the interviews have already started, so you don't have time to watch all the entire course. So I will say 4-5 formula, like VLOOKUP, XLOOKUP since it's new and you can expect this, pivot tables, conditional formatting, ठीक है, functions जो आपके formatting functions होते हैं वो वाले सारे, logical functions होते हैं वो सारे, तो ये सब जो चीजें हैं ये वाले आप देख लो क्विक. बाकी पूरा तो जब आपको फ्री टाइम मिले, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, बस इतना पता होना चाहिए, हो जाएगा क्रैक. Okay. And one more thing, if the interviewer asks like, why am I switching my department? Why am I switching my domain? How should I convince and how should I tell him about it? How are you switching your domain? Like आप अभी आर्टिकलशिप कर रहे हो कहीं पे? Ma'am, I was actually into a firm doing articleship. I have taken a transfer and I am because I want to pursue my articleship into Big 4, Big 6 firms. So अच्छा. that is why. Okay. तो ये जो 3.5 month था ये तो कुछ और ही था ना? या फिर ये That वही was था? articleship. That was articleship. अच्छा, okay. I thought this is like some internship in IB that you were interested in. No, ma'am. Okay. So आप देखो हाँ, तो आपको ना क्लियरली मेंशन करना चाहिए था शायद से वहां पे आर्टिकलशिप, या पता नहीं मैंने स्किप कर दिया, मैंने इंटर्नशिप सुना उसे. तो आपको पहले से आर्टिकलशिप बोलना है क्योंकि आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट आपका ट्रांसफर केस है. बिग फोर ट्रांसफर केस ले लेते हैं इजीली, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. But yeah, you have to justify it by just showing your enthusiasm towards the domain statutory audit, you know. Then they can definitely ask question. तो आपको 3.5 महीने पहले नहीं पता चला था. Then you have to just add answers that, you know, after talking to my friends that I was like in a hurry to complete the registration. That's why I didn't do much research at that time. And now I believe after working for 3.5 months, that start audit is my real calling, wherein I'll get to interact with clients, top management, and I'll also get to, you know, perform on the financial statements level, which is like my specific interest area, and I'd like to go deep into that, finding mistakes, having that skeptical mindset to find mistakes, to find, you know, the deep rooted meaning behind the numbers. So that's what I'm really interested in. So that's why I think it'll be best. And I think I can give my best shot if I am working in the start audit. So that's how you can justify, and that'll be absolutely okay. No problem in that. Okay, ma'am. Okay. Chalo. Yes, ma'am. All Thank the you so best. much for this opportunity. All the best, Mihir. All the best. Thank you. So, ma'am, if we have audited really big brands, then also we can't mention them on CV. Sometimes names are more effective than numbers. Asking in terms of both offline and Aradhana, straight answer, no, you should not. You should never mention client's name. कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है एप्लीकेबल, चाहे आप आर्टिकल लेवल पे हो चाहे आप सीए लेवल पे हो. आपको इंडस्ट्री नंबर्स ही मेंशन करने हैं क्योंकि नंबर्स आपका रिफ्लेक्ट कर देंगे. क्योंकि अगर आपने ये बताया कि भाई मैंने जो है मान लो रिलायंस कंपनी का कुछ जो है एक सेगमेंट जो उनको ऑडिट करा है, राइट, आपने वो मेंशन कर दिया. आई अंडरस्टैंड कि नंबर बहुत बढ़िया है और सुनने में लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप उसके बदले में ये भी मेंशन कर दोगे कि भाई मैंने 5,000 करोड़ की कंपनी का ये वाला सेक्शन, अकाउंट्स पेबल वाला सेक्शन जो है टेक कर किया है, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू मेक द सेम यू नो सीन. और एक बार तो सही बताऊं, एक बार आप टीम ज्वाइन कर लोगे तो पता तो चल ही जाएगा ना कि कौन से क्लाइंट्स पे आपने काम किया था. वो आपको रेज्यूमे लेवल पर, मैं बता रही हूँ कि रेज्यूमे लेवल पर आपको नंबर्स मेंशन करने हैं. यूजुअली क्लाइंट्स नहीं मेंशन करते हैं. आप इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री मेंशन कर दोगे, फिर जो एसेट है, टर्नओवर है, वो भी मेंशन कर दोगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदाजा लग ही जाता है कि कौन सा क्लाइंट होगा, कितना बड़ा कैसे होगा. बट वी नेवर, दिस इज आवर प्रोफेशनल एथिक्स ऑल्सो, वी नेवर मेंशन क्लाइंट्स. ठीक है. Do Big Four take those who have cleared intermediate and second attempt? 100%. Up to 3 attempts कोई दिक्कत नहीं होगी. This is for everybody, Chaitanya. Up to 3 attempts, no problem at all. मैम 3 attempts के बाद दिक्कत होती है? नहीं, 3 attempts के बाद भी if you have technical knowledge and good communication skills, you do stand a 100% chance of getting into Big Four. Mark my words. तो लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम आप गारंटी ले रहे हो, लेकिन मैंने 2 चीजें बोली हैं. 2 चीजें हैं कि आपको टेक्निकल और अपना कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. और एंटायर प्रोसेस जो वो बीच में गिव अप कर दोगे, भाई 4 कंपनी में अप्लाई करके आप बैठ जाओगे शांत होके, ऐसा नहीं चलेगा. अब बिग फोर में भी देयर आर यू नो सो मेनी टीम्स, लाइक भाई 100 टीम होंगी आराम से.
ठीक है, तो वो कौन सी टीम में आप जाओगे, किस टीम में वैकेंसी राइज हुई है, कौन सी एचआर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, राइट, कौन से ऑफिस, लोकेशन, टीम, एचआर, तो आपको जितनी जगह मिल रहा है, मतलब पीडब्ल्यूसी डब्ल्यूसी में आपको भाई 10 एचआर को रीच आउट करके 10वां एचआर को जो है आपको रेज्यूमे सेंड करना है, राइट। तो बिल्कुल शांत नहीं हो जाना है कि अच्छा मैंने भेज तो दिया पीडब्ल्यूसी में, एक बार ही भेज दिया, नो, यू हैव टू सेंड इट टू डिफरेंट मल्टीपल पीपल वर्किंग एट पीडब्ल्यूसी, पता नहीं कहां से रिस्पॉन्स आ जाएगा, एचआर, मैनेजर, आर्टिकल से रेफरेंस, जो मौका पड़ रहा है वहां से लगवाना है आपको रेफरेंस अपना, ठीक है। मैम, हाउ इज M&A profile for to start as a CA fresher? I think it's a very exciting profile. It's a niche profile, Samyak. And I think आप अभी जो हमने वैकेंसी रोल आउट करी है M&A टैक्स वाली, आई थिंक आप उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिलॉयट की हमने वैकेंसी रोल आउट करी है. So I think it's a very exciting field. और mergers and acquisition is all about all the mergers and acquisition that you see around. और इतना मतलब प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है ये जो सारा काम है, एंड इतना क्या बोलते हैं डायनामिक, इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतने सारे आपको कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे ना, लाइक हाउ दिस एंटायर इंडस्ट्री वर्क्स, लाइक मर्जर अलग है, एमैल्गमेशन अलग है, एक्विजिशन अलग है, तो हर प्रोजेक्ट आपका डिफरेंट होगा और बहुत डिफरेंट होगा. Obviously the foundational concepts, they remain the same, and a lot of IFRS will be there. So you know, I really think that that's like one very exciting profile to work in. Ma'am, people suggest to say that you skipped an attempt instead of mentioning you failed. Is that good idea? Like when it asks on portal, how many attempts? When people suggest to say that you skipped an attempt instead of mentioning. यार ये ना बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात है कुशाग्र, तुमने जो यहाँ पे पूछी है. I will say you should never lie about your attempts, guys. ठीक है कि so I will say that you should never lie about your attempts, but I think you kind of read between the lines what I'm trying to say. If that's अगर ज्यादा attempt नहीं है, 4 को 3 कर रहे हो, I don't think that's gonna make much of a difference. But again, like you should also not lie about your that's enough. I think I've conveyed. I have 8 months of pre-qualification experience in an MNC. So will my experience be considered, or will I be considered a fresher? See, अगर आपने क्वालिफाई करने के बाद मतलब अब आप काम ढूंढ रहे हैं, तो क्वालिफाइड CA फ्रेशर है आप, बट यू आर एब्सोल्युटली नॉट अ फ्रेशर. तो जब आप वो एक्सपीरियंस अपने पंक्ति रेज्यूमे में लिखेंगे, यू विल डेफिनेटली हैव एन एज ओवर अदर्स, बिकॉज बाकियों ने सिर्फ आर्टिकलशिप किया रहेगा, और आपके पास आर्टिकलशिप होगा प्लस आपका 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा टू योर क्रेडिट, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू, राइट. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अंशिता का क्वेश्चन है, what can be different strengths and weakness? That's a very interesting question. It's one of my favorite questions in the interview. So let's talk a little bit about that. स्ट्रेंथ में हमें डेफिनेटली अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है हमारी पर्सनालिटी के बारे में, वी हैव टू मेंशन दैट. फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेरी नंबर सेंट्रिक पर्सन, एंड नंबर्स आई लव numbers, and I'm really passionate about numbers. That could be my strength, right? Then another strength could be that I'm a very analytical person, that whenever a project is given to me, to think about what all pros and cons can be generated from that, I think I'm really good at, and in analyzing a project, whether it's good to invest in that or not. Now, this is a strength, but what happens is, because of my over analytical personality, I tend to take a lot of time in decision making, which can delay the project as well. So what I'm trying to do is, now I take the deadline in advance, so that I know how much time do I have to analyze a particular project, so that I can also live up to the expectations of my boss and my peers, right? So आपने क्या करा, basically हमें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, आपको पत्थर भी फेंकना है तो वो रेशम के रुमाल में लपेट के फेंकना है, राइट. सो दैट्स व्हाट अ वीकनेस इज, दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट इट, कि हमें ये दिखाना है कि हमारी वीकनेस है, लेकिन हमें इसे ऐसे दिखाना है कि हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है. और स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ है ही, तो हमारा डबल धमाल है यहाँ पे, ठीक है. तो स्ट्रेंथ में आपकी जो स्ट्रेंथ है, दैट आई एम अ वेरी कमिटेबल पर्सन,
एंड जो भी आपको लगता है कि आई थिंक आई कैन लीड माई टीम रियली वेल, आई एम अ वेरी एम्पथेटिक पर्सन, and I not just care about the role, and I'm very a people oriented person. I love to work in team, I love to collaborate with people, I love to contribute, and I'm a very goal oriented person. तो ऐसे करके आप स्ट्रेंथ बता सकते हो. वीकनेसेस में मैं कुछ वीकनेसेस बताती हूँ जो आप एज एग्जांपल यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में. नंबर 1, लाइक ये जो मैंने अभी कोट किया, लाइक एट टाइम्स व्हेन आई हैव टू कंडक्ट टू मच ऑफ एनालिसिस, आई टेक अ बिट ऑफ टाइम व्हिच कैन डिले, बट यू नो आपको हमेशा ये भी बताना है कि आप उसको करेक्ट कैसे कर रहे हो. जैसे मैंने बताया कि टाइम लगा देता हूँ मैं डिसीजन लेने में, तो मैं उसको करेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैं पहले ही डेडलाइन ले लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे मेरे को कितने टाइम फ्रेम में अपना डिसीजन डिलीवर करना है. Number 2 could be that, you know, when I am working, I get too much exhaust, too much involved, too much immersed in the work that I start to ignore my physical health. For example, I forget about my meals, so it kind of affects my health in the long run. But I'm trying to correct this habit of mine, wherein I put alarms, I put constant alarms that I have to take food, and if I'm not in a if I don't have the bandwidth to take a proper lunch, I include a smoothie just so that I can have a quick lunch and I can focus on work again. So ये बता दिया कि हाँ. And then the other thing that you can talk about is that, you know, I am a very peculiar person. I go into details too much. अब आप बोलोगे कि ये तो अच्छी बात है, ऑडिटर को तो जरूरत होती है, but आप बोल सकते हो at times, you know, it can lead to micromanagement, and at times I believe my juniors will have a problem because I end up micromanaging doing that. Then उसके डिफेंस में आप ये बोल सकते हो, but I'm definitely trying to change this habit, trying to improve myself by giving people a lot more freedom so that they also have independence with their work. And then when I'm reviewing, I am definitely pointing out the mistakes. So ऐसे करके आप उसे पूरा बना सकते हो. मैम स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं क्या? स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन मैं बोलूंगी इसको सेव करके रखो इंट्रोडक्शन में, क्योंकि एनीवे इंट्रोडक्शन 4 पार्ट में होने वाला है, आपका काफी बड़ा हो जाएगा, तो अवॉइड करो, क्योंकि एनीवे शायद वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आ ही जाएगा. कैन आई से दैट आई एम वेल वर्स्ड विद current affairs as weakness, but I'm reading newspapers to overcome that? I will not recommend it, Anshita. Reason being क्या है कि as a finance professional, right, it's expected from you to stay abreast of all the at least finance world में. Current affairs बाकी सब छोड़ो, but और आप ये मत सोचो कि करंट अफेयर्स आपसे पूछे ही जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हो ये वीकनेस बोल के कि भाई मेरा ये वीकनेस है और you know I'm trying to read it, but don't think too much of जो लेकिन फाइनेंस वाले हैं प्लीज आपको उनको बारे में पढ़ना है, एंड इट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू. कम ऑन गाइज, आप सीए प्रोफेशन में हो, आपको अमेंडमेंट से बिल्कुल लाइक यू नो कंधे से कंधा मिला के चलना है. तो बीइंग अब्रेस्ट विद at least the finance domain is something that is expected from you. बाकी चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं पता भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, नहीं पता, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है. तो मैम विल यू टेक मॉक इंटरव्यू सेशन? आई एम हैविंग, अरे बाप रे, कुशागर को तो फीवर ही हो गया, ये लाइव सेशन की वजह से बेचारे को फीवर ही हो गया है. आई रियली वांटेड टू गिव, हाँ मॉक सेशन, मॉक इंटरव्यू सेशन भी हम करेंगे. अच्छा ये बताइए गाइज, मुझे आपके सजेशंस चाहिए. नेक्स्ट जो सेशन है हम किसके ऊपर करें, कौन से टॉपिक के ऊपर करें? आई विल जस्ट टेल यू, आई हैव 4 टॉपिक्स: रेज्यूमे, इंटरव्यू, लिंक्डइन, ग्रुप डिस्कशन. जल्दी से मुझे सजेशंस दीजिए. यूट्यूब में, लिंक्डइन पे. मैम इंग्लिश समझ आती है बट बोली नहीं आती है. मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ, क्या मैं अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप कर सकता हूँ? मेरी इंटरमीडिएट अटेम्प्ट है May 24 में. देखो विनय यूट्यूब पे ये कमेंट आया है. विनय, हम जिस काइंड ऑफ प्रोफेशन में ना, जिस काइंड ऑफ प्रोफेशन में आप हो, इवेंचुअली आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी बच्चा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप एस्केप कर सकते हो. तो मैं ये बोलूंगी आपको अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए. और अभी तो आपको May 24 में एग्जाम है, May 24 में एग्जाम है, उसके बाद आपको आर्टिकलशिप जो है ढूंढना पड़ेगा, राइट. तो May 24 तक तो बहुत टाइम है आपके पास. अभी आप अपना करिकुलम इतना सारा पढ़ लेंगे, आपके पास इतने कीवर्ड्स आ जाएंगे ना कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब अपने आंसर्स फ्रेम कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी. बट यू हैव टू बी एक्टिवली थिंकिंग अबाउट इंप्रूविंग इट, राइट. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है. थोड़ी थोड़ी चीजें, जो बेसिक चीजें आप कर सकते हो जो इतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. वन इज रीडिंग, राइट. आप
ट्रैवल कर रहे हो, ऑटो में जा रहे हो या फिर कैब में जा रहे हो, न्यूज पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ा सा उससे वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है और सेंटेंस फॉर्मेशन की समझ आने लग जाती है, ठीक है। वंस फर्स्ट स्टेप इज दिस, फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग, ठीक है। राइटिंग सबसे बाद में आएगा, रीडिंग एंड देन स्पीकिंग। देन आपको धीरे धीरे अपने स्पीकिंग में लेकर आना है। वंस यू हैव आप सेंटेंस अपने दिमाग में फॉर्म कर लेते हो, फिर तो बस बोलने में होता है। क्या है कि हम जब बचपन से जब हम बड़े हुए, हमारा इंग्लिश की तरफ इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो हमारा एक जो रोड ब्लॉक है वो ये है कि हम पहले हिंदी में सोचते हैं। मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, आप उसे हिंदी में सोचोगे और फिर आप उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे अपने दिमाग में, एंड देन यू विल रिस्पॉन्ड। लेकिन जो काफी टाइम से इंग्लिश बोल रहे हैं, वो अपना आंसर ही इंग्लिश में सोचते हैं और फटाफट बोल देते हैं, राइट। सो दे डोंट हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा स्टेप दैट यू हैव टू डू। बट ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम ऐसा रहेगा। दिस इज समथिंग दैट कैन कम एज क्विकली एज पॉसिबल इफ यू प्रैक्टिस इट। तो सबसे पहले रीडिंग का हैबिट एंड देन स्विच टू स्पीकिंग, राइट। सो ऑल द बेस्ट विद दैट। अरे बाप रे, इतने सारे सजेशन, जीडी लिंक्डइन, इंटरव्यू। ओके, आई थिंक जीडी की काफी रिक्वेस्ट आ रही हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव 1 सेकेंड, लेट मी चेक हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का सेशन कब है। मैं भी बताती हूँ कि हम अपना नेक्स्ट सेशन कब रखने वाले हैं। तो हमारा गाइज ये हो चुका है, 17 को हमारा, यानी कल हमारा FP&A का सेशन है, 18 को हमारा सनत सर का सेशन है, उसके बाद हमारे पास 19-20 फ्री है। तो 19 को हम अपना नेक्स्ट सेशन रखेंगे और वो हम अपना ग्रुप डिस्कशन पे रखेंगे, ठीक है, बिकॉज जीडी की काफी रिक्वेस्ट आई हुई है। मैम एट जीडी राउंड होता है बिग 6 में, बिकॉज नाउ द इंटरव्यू ऑनलाइन थ्रू। हाँ, तो देखो जीडी ना इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर कैंपस प्लेसमेंट। ऑफलाइन ऑनलाइन जो हो रहे हैं उनमें जीडी का उतना रेलेवेंस नहीं है। पहले मतलब हमारे जमाने के टाइम पे ऑलमोस्ट 10 years ago तो जीडी होता था हमें, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू सारे प्रेमिसेस पे ही होते थे। तो प्रेमिसेस पे जाकर वहां पर, क्योंकि बहुत सारे 500 लोग आए हुए होते थे इंटरव्यू देने, तो वो बैचेस में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन करा लेते थे, फिर उसके बाद रिटन करा लेते थे, रिटन वालों को जो है आगे भेजते थे। तो मैंने BMR में इंटरव्यू दिया था, जीडी दिया था, वहां क्लियर हो गया था। EY में जीडी दिया था, वहां पे भी क्लियर हो गया था। EY वाले ले रहे हैं क्या ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन। जो दूर लोकेशन वाले हैं सब में ऑनलाइन ही हो रहा है। प्रेमिसेस पे जो है वो हो रहे हैं जहां पर इमीडिएट, एकदम इमीडिएट फुलफिल करने वाला रिक्वायरमेंट है, या फिर उन्हें चाहिए कि बिल्कुल। अभी भी क्या है कि ना 2 टाइप से हो रहा है काम, कहीं पर हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, कहीं पर फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो जो फुल टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली है ना, तो वहां पर तो आप ये समझिए कि आपको प्रेमिसेस पे बुलाया जरूर जाएगा। लेकिन हाइब्रिड मॉडल वाली जो है उसमें आपको ये करा जा सकता है कि आपका ऑनलाइन जो है प्रोसीजर्स लेने, एंड व्हेन यू ज्वाइन देन डेफिनेटली यू विल हैव अ हाइब्रिड मॉडल। लिंक्डइन सेशन ले लीजिए मैम। यस, डेफिनेटली वी विल टेक दैट एज वेल। Ma'am, I've recently qualified CA, working in a friend's firm from last 3 years after articleship. Should I mention that in my CV or just leave my CV blank for that period? Okay, I think वैभव आपको बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, और आपको नंबर्स भी मेंशन करने चाहिए कि आपने अपने फ्रेंड को पहली बात तो कौन कौन से टास्क में हेल्प किया, क्या काम आप कर रहे थे, कितने नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं, आप फाइनेंस का जो है टेक केयर कर रहे थे, आपने उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज 10% इंप्रूव करा दी, ये मेंशन करिए। आपने उनकी 100% कंप्लायंस कराई, 100% कंप्लायंस उनके बिजनेस की कराई, वो मेंशन करिए। आपने जो है एक पोटेंशियल लॉस होने से बचा लिया, क्योंकि इसमें कुछ जो है गड़बड़ हो रही थी वेंडर के साथ, आप वो चीज मेंशन करिए। या फिर आप ये मेंशन करिए कि मैंने जो है पहले फाइन्स एंड पेनल्टीज बहुत भरते थे लोग, मेरे ज्वाइन करने के बाद फाइन एंड पेनल्टीज इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस फाइन्स एंड पेनल्टीज बिल्कुल 0 हो गई हैं। तो आप 100% एफिशिएंसी है वहां पर, वो चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल क्वांटिफाई करिए और अच्छे से मेंशन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसमें। yes Summer, I will be checking it. I have CA inter attempt in May 24. Okay. How can we make it to Big 4 if we don't have references? References is not important for Big 4 interview, Geetika. तो उसके लिए आपको just you have to start applying. जितनी opportunities आपको दिख रही हैं LinkedIn पे, you have to keep applying there. जो vacancies हैं, career pages हैं,
थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, जॉब वेबसाइट्स जो होती हैं, नौकरी, इंडीड, सब जगह से आपको अप्लाई करना है। आपको अपने मतलब कान आंख सब खुले रखने, एकदम एक्टिव मोड में रहना है अभी, ठीक है। क्या पता कहाँ से किस्मत चमक जाए, जहां पे दिख रहा है ना वैकेंसी या आर्टिकलशिप की, ऐसी अप्लाई कर दो बिल्कुल। अपना सबसे पहले रेज्यूमे, कवर लेटर, ये सारी चीजें प्रिपेयर करके रख लो, और उसके बाद सिर्फ लाइक अप्लाई करते चलो। थोड़ा सा ऑब्वियसली यू हैव टू काइंड ऑफ मॉडिफाई इट जिसमें फॉर्म में आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, दिस क्वेश्चन अटेम्प्ट है 24 में, बीकॉम कर रही हूँ रेगुलर कॉलेज से। आई हैव डन वन इंटर्नशिप बट इट वाज नॉट टू गुड। आई हैव वर्कड इन कंसल्टिंग एंड बिजनेस सोसाइटीज इन कॉलेज। व्हाट काइंड what should I keep in mind for communication skills? I'm weak on that. Okay, learning Excel, but please tell Excel how different from others, like by doing projects, etc. How to be different from others. Okay. Okay. So what you can do is Aman, देखो communication skills weak है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। I'm pretty sure आपका थोड़ा technical जो है थोड़ा strong होगा। तो MS Excel आपने कोर्स करा है, that's something that you can mention कितने घंटे आपने करे हैं, ठीक है। उसके बाद आप डेफिनेटली MS Excel ओरिएंटेड कोर्सेज ही और कर सकते हो, जैसे पावर BI हो गया, ठीक है। मतलब नंबर ओरिएंटेड, नॉट MS Excel ओरिएंटेड पर से, बट हाँ उसमें भी MS Excel का जो डेटा मतलब ड्रिलिंग होता है उसमें कहीं ना कहीं इसमें एक्सेल आ ही जाता है। तो पावर BI, कुछ एडिशनल टूल्स आप सीख सकते हो जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। और अगर आपको प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना है, जिसे हम पोर्टफोलियो या प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, वो भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है 5 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी, उनके फाइनेंशियल मॉडल्स आपने बना रखे हैं, ड्राइव पे डालो, उसका लिंक डालो, अपने रिज्यूमे में लगा दो। दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ, राइट। अगर आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करा है, अपने एनालिसिस का, फाइनेंशियल रेशियोज का, जो भी आपने वर्किंग बनाया है उसको ड्राइव पे अपलोड कर दो। यू कैन अपलोड ऑल दैट प्रूफ ऑफ वर्क ऑन दी ड्राइव एंड शेयर विद दी रिक्रूटर, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल अनमोल, आपको करना चाहिए अगर एक बंदे ने रेफरेंस लगा दिया है, क्योंकि पता नहीं है ना कि उसका रेफरेंस आगे फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो आर्टिकल लेवल पे खुद ही नहीं पता होता है, वो भी बस अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। तो जहां से रेफरेंस कहीं और से भी मिल जाए वहां से भी अप्लाई कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अगर एक जगह पर आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोसेस हो चुका है, तो दूसरी जगह पर वो आ जाएगा कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो क्या है कि उनके, क्योंकि सेंट्रलाइज पोर्टल होता है, तो सेंट्रलाइज पोर्टल होता है, उसमें दिख जाता है कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड या ऐसे करके कुछ है। तो फिर आपको पता ही है दूसरी ईमेल आईडी भी वी कैन ऑलवेज क्रिएट, राइट। कहीं से एक भी मौका छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई बोल रहा है ईमेल आईडी भाई तेरी इसमें आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, भाई मैं तेरे को दूसरी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, बट यू शुड नॉट लेट गो ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल एकदम जैसे बोलते हैं ना वल्चर की तरह बस नजरें गड़ा के बैठ जाओ अपनी डिफरेंट वैकेंसीज के ऊपर, एक भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। सो 11 बज गए हैं भाई, थोड़ा सा हम भी वाइंड डाउन कर लें अपना, ठीक है। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, इतने सारे लोग एंड तक जुड़े रहे एंड आई बिलीव लाइक 90 तक टच कर गया था हमारा। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन एंड डेफिनेटली हम दोबारा कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी, स्पेशली द गाइज हु टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू, मिहिर, अंशुल, उदित। So thank you guys for taking this initiative, and soon we'll meet you guys for a group discussion. Or group discussion is my personal favorite. I have been training people in group discussion for almost like 10 years now. So बीच में ब्रेक था, बट हाँ तो मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ ग्रुप डिस्कशन में तो करती रहती हूँ। दैट्स वन ऑफ माय एक्सपर्टीज एरिया। तो मिलेंगे आपसे ग्रुप डिस्कशन में। मैम, व्हाट इफ माय रेफरल वाज डन विद द रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे? अब वो तो देखो बात खत्म हो गई है ना अंशिता, अब कहीं और दूसरे बंदे से रेफरेंस मांग के अप्लाई कर दो विद द करेक्ट फॉर्मेट। वो कोई बात नहीं, अब जो बात जा चुकी वो जा चुकी, उसका टेंशन मत लो। VBA ऑल्सो बिल्कुल कर सकते हो इन व्हाट फॉर्म ऑफ इनटू समवॉट फॉर्म ऑफ डेटा एनालिटिक्स। या डेफिनेटली अमन, गो अहेड, VBA तो काम आएगा ही आएगा। FP&A की प्रोफाइल ऑडिट में भी इनफैक्ट अगर आप इंटीग्रेट कर पाओगे तो मतलब प्रिंसिपल आपको जो है बोलेगा नमस्ते भाई आप बहुत अच्छे हो, आप फेवरेट बन जाओगे उनके, अगर आपको एक्सेल और इन सब पे बहुत अच्छे से काम करना आता होगा, ठीक है। तो on that note, thank you guys, it was a lovely interaction. एक बस लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आराधना का, हाउ टू मेंशन आर्टिकल्स ऑफ फर्म डिटेल्स इफ वी वर इन लोन स्टाफ अग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टनर्स। यू कैन मेंशन द कंपनीज नेम, क्योंकि लोन स्टाफ अग्रीमेंट वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है, आप काम उस मेन कंपनी में ही कर रहे होते हो। इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट एनरोलिंग यू ऑन देयर पेरोल, ठीक है।
तो वो अपना बस सरदर्दी कम करने के लिए, और दूसरा ये कि पार्टनर्स जो होते हैं उन पे लिमिट होती है कि वो इतने ही आर्टिकल्स अपने अंडर रजिस्टर कर सकते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे डू लोन स्टाफ अग्रीमेंट विद थर्ड पार्टीज, दूसरे सीएस के अंडर रजिस्टर करके, पर आप काम अपनी उसी कंपनी में कर रहे हो तो जिसने आपको लोन स्टाफ पे रखा है, तो आपको कंपनी ब्रांड का ही नाम मेंशन करना है. वो इंटरनल अरेंजमेंट है, उसको यू डोंट हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दैट, आराधना. ठीक है. सो बिल्कुल बेझिझक जिस भी कंपनी में आपने काम किया है उसी का ही नाम लिखिए, क्योंकि क्लाइंट्स भी उन्हीं के, नाम भी उन्हीं का, सब चीज उन्हीं की. सिर्फ अग्रीमेंट ऑन पेपर दिखाने के लिए, क्योंकि आप वो उनको वो पेरोल पे रख नहीं सकते ना, आपको रजिस्टर कर नहीं सकता प्रिंसिपल आपको. ठीक है. तो that's about it. SQL art, if I have some time. No, you can definitely, like, in future fintech में तो SQL R, Python ये सब तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. यू शुड टोटली परस्यू इट अमन, इफ दैट इज योर इंटरेस्ट एरिया. मैंने बोला ही था, मुझे लग रहा है कि आपका टेक्निकल काफी स्ट्रांग है. इफ यू हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस, you have ample opportunities to explore, trust me. So go ahead with that, don't restrict yourself in that. ठीक है. So bye bye guys, good night and have a great night ahead. Like अगर आप अभी पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, वो करिए, और नहीं तो भाई सो जाइए चद्दर तान के. ठीक है. It was a nice and lovely session. Thank you so much. Good night. Bye bye.